Hello everyone. Today we'll discuss a very important topic in the subject semantics, and that is reference. Sometimes we know the meaning of a linguistic term when it refers to a thing or a person that exists in the real world. For example, if I say a tree, so a tree is a linguistic term or it's a language that I use, and it refers to a thing that exists in the real world. We can see tree, different kinds of tree. Or if I say that I met John, so John is also a linguistic term. And when I utter the word John, so John is the person that exists in the real world. So reference is the relationship between a linguistic term and a thing or a person that exists in the real world. We'll discuss in detail that how do we know the meaning of words through reference. Let's begin and learn in detail. Definition. By means of reference, a speaker indicates which thing in the world, including persons, are being talked about. So when we say that reference, right? So a speaker indicates that which thing or which person is he talks about or she talks about. Like for example, here we have example that my son is in the beech tree. Here we have two words. One is my son and one is the beech tree. So my son identifies a person and the beech tree identifies the thing, right? So the word my son or linguistic term my son, it refers to the person that exists in the real world. And the beech tree, you see, linguistic term, right? And it refers to the thing that exists in the real world. So this is okay, that knowing the meaning of words through reference. So what is reference? Reference is the relationship between linguistic term and the person that exists in the real world. Or reference is the relationship between linguistic term and the thing that exists in the real world. So the thing can be that you see non-living thing, right? It can be a chair, it can be moon, or it can be a book, it can be a mobile phone, it can be a person like you or watching and listening to this lecture, it can be me, it can be someone else, right? So we are, because whenever we refer to the things or people in the world, so of course we use language or we use linguistic terms. Let's explain in more detail. Here we have some practice, because without practice you are not going to understand the concept of reference completely. So before answering these questions, you should carry out the following simple instruction. Touch your left ear, right? If you're watching or you're listening to this lecture, so I am asking you that touch your left ear. So when you touch your left ear, so write down the last three words in the above instruction. This is instruction. So perhaps you're going to write down here your left ear, because these are the three words. When I say touch your left ear, and then I ask you that write down the three letters, the three words in the above instruction. So these are the three words, your left ear. You're going to write it here. And is the thing you touch a part of the word or a part of the language? The thing you touch, what is the thing you touch? That is your left ear. So the left ear, what do you think? Is it the part of a language or the part of the word? So your answer should be that it is the part of the word, because we can't find ear like in dictionary, right? Dictionary is not
we can't touch this like one of the organ of your body, ear, in dictionary. Fine. So the thing you're going to touch, it exists in the real world. It does not exist in language. Third, is your answer to one a part of the language? This one. Is it, if you're writing here that your left ear, so is your answer in one part of the language? So answer is absolutely yes, because you're writing here something. So when you write here something, that is part of the language, right? And when you are touching something, it is the part of the word, not part of the language. 4. If you say to your mother, there is a wasp on your left ear, does your left ear here refer to the thing you touch in the response to the previous question? आपका क्या ख्याल है? आप जो है ना अपने माँ को कहते हैं कि there is a wasp on your left ear, be aware. So does your left ear, इससे पहले आपने जो अपना लेफ्ट ईयर टच किया था, वो लेफ्ट ईयर और आपके मदर का जो लेफ्ट ईयर है वो सेम है, और डू दे रेफर टू द थिंग यू टच द सेम इन द प्रीवियस रिस्पॉन्स, बिकॉज वहां पर आपने अपने आप के कान को टच किया. यहां पर हम बात करें कि आपके मदर की कान, तो क्या आपके मदर की कान और आपने जो कान टच किया था वो सेम है? ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट. सो इससे आप क्या इन्फर करते हैं, आप क्या खस करते हैं? इससे हम ये खस करते हैं कि देयर कैन बी सो मेनी रेफरेंट फॉर अ लिंग्विस्टिक टर्म योर लेफ्ट ईयर. एक्सक्यूज मी. क्योंकि लेफ्ट ईयर जो है ना वो आपका भी हो सकता है, लेफ्ट ईयर जो है ना वो आपके मदर का भी हो सकता है, लेफ्ट ईयर जो है ना वो आपके फादर का भी हो सकता है, लेफ्ट ईयर आपके दोस्त का भी हो सकते हैं, लेफ्ट ईयर जितने भी दुनिया में लोग हैं उनके हो सकते हैं. सो इट मीन्स के योर लेफ्ट ईयर, आपका बायां कान, ये लेफ्ट ईयर is a linguistic term. So for one linguistic atom or one linguistic term, we can have so many referent can be there. हम तो ये नहीं कह सकते ना कि योर लेफ्ट ईयर के लिए कोई और लैंग्विस्टिक टर्म होगा, फिर हम कहते हैं कोई बंद और खड़ा है उसको मैं कहता हूँ कि योर लेफ्ट ईयर, तो उसके लिए कोई और लैंग्वेज, तो फिर तो इस तरह जो है ना आप डिक्शनरी में इतने ज़्यादा अल्फाज नहीं अकोमोडेट कर सकते. ये तो अरबों करबों में जो है ना हो जाएंगे अगर आप सिर्फ योर लेफ्ट ईयर, हर एक बंदी की लेफ्ट ईयर को आप डिक्शनरी में डालते हैं. सो डिक्शनरी में जब हम देखते हैं कि योर लेफ्ट ईयर, या हम बोलते हैं कि योर लेफ्ट ईयर, so your left ear can have so many hundred, thousands and million of reference. Fine. So it means कि एक linguistic expression या linguistic atom या linguistic term के so many reference हो सकते हैं. Comment. In the present circumstances, your left ear refers to the thing you touch in response to one. अगर मैं आपको कहता हूं कि टच योर लेफ्ट ईयर, सो ये आपका लेफ्ट ईयर है. अब आप एंड वी से दैट योर लेफ्ट ईयर इज द रेफरेंट ऑफ द फ्रेज योर लेफ्ट ईयर. सो आपका जो लेफ्ट ईयर है आप इसको टच करते हैं, ये रेफरेंट है इस लिंग्विस्टिक एटम योर लेफ्ट ईयर के. सो योर लेफ्ट ईयर इज अ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, और इसका जो रेफरेंट है वो क्या है? आपका जो बायां कान है. सो रेफरेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज. रेफरेंस फिर क्या होता है? रेफरेंस जो है ना वो रिलेशनशिप होता है पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, एंड थिंग्स आउटसाइड द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो लैंग्वेज से बाहर होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका जो बायां कान है ये लैंग्वेज से बाहर है. Yes, your left ear that is outside of the language. So the relationship between part of the language and the thing that is outside of the language that exists in the real world. Now the same expression can in some cases be used to refer to different things, as I told you. अगर मेरे सामने यहाँ पर एक ट्री है, मैं कहता हूँ कि ट्री, so that time tree refers to the tree that I can see.
अगर आप कहते हैं कि आई सॉ अ ट्री, सो आपके ज़हन में जो ट्री होगा वो कोई और होगा, उस ट्री का रेफरेंस कहीं और होगा। कोई और कहता है कि आई क्लाइम द ट्री, राइट, सो उसके ज़हन में वो ट्री होगा। सो मतलब कि एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के कई रेफरेंस हो सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी पोटेंशियल रेफरेंस फॉर द फ्रेज योर लेफ्ट ईयर as there are people in the world with left ears. Likewise, there are as many potential reference for the phrase this page, okay, or we can say that this slide, this slide. So this slide अगर मैं कहता हूं यहां पर this slide refer to this one, अगर इसके बाद मैं कोई और स्लाइड पढ़ता हूं तो this slide refer to that slide. अगर कोई और पढ़ता है तो वो उसको दिस स्लाइड से मतलब वो स्लाइड होता है। सो इट मीन्स कि हमारे पास एक लिंग्विस्टिक एटम टर्म और लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के कई हमारे पास रेफरेंस हो सकते हैं। दस सम in fact very many expressions in the language can have variable references. हमारे पास एक जो एक्सप्रेशन होता है उसके कई वेरिएबल रेफरेंसेस हो सकते हैं। आपको मैंने कहा ना, व्हेन आई से दैट आई हैव अ मोबाइल फोन, सो व्हेन आई से आई हैव अ मोबाइल फोन, सो मैं यहाँ पर मोबाइल को, किस मोबाइल को रेफर कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास मोबाइल है। अगर आप कहते हैं कि आई हैव अ मोबाइल फोन, सो आपके पास जो मोबाइल है आप उसको रेफर करते हैं। तो मोबाइल के कई रेफरेंस हो सकते हैं। मेरे पास जो मोबाइल है ये मोबाइल, आपके पास जो मोबाइल है वो मोबाइल, किसी और के पास जो मोबाइल है वो मोबाइल। सो देयर कैन बी 100 and 1000 ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस लिंग्विस्टिक टर्म मोबाइल फोन। फाइन, वी हैव some more practice here. What would be the reference of the phrase the present president of the United States use in? अगर आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 2007 में, सपोज ये 2007 है, और आप ये जुमले इस्तेमाल करते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, राइट। अगर आप कहते हैं यही जुमला कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, ये लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं कब, 1996 में, तो फिर यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा बिल क्लिंटन। सो यू सी दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 2007 में क्या आएगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, 96 में बिल क्लिंटन। अब 2024 में क्या आएगा, ऑफ कोर्स दैट वुड बी Biden. So it means that the present president of the United States, this linguistic, which is the part of the language, ये language का एक हिस्सा है। So इसके so many reference हो सकते हैं। So एक linguistic expression के लिए हमारे पास कई reference हो सकते हैं। वो depend करता है कि आप ये किस context में और कब use करते हैं। So therefore, we can say that the phrase the present president of the United States has, right now here we have two reference. अगर आप हम यहाँ ऐड करते हैं 2024, तो फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे 3 रेफरेंट, ठीक है। अगर आप जो है ना यहाँ पर किसी और साल को भी डालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 4 या 5 रेफरेंट। सो यहाँ पर इस पेज में हमारे पास द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के 2 हमारे पास रेफरेंस आ जाते हैं। एक हमारे पास आएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, एक हमारे पास आएगा बिल क्लिंटन। नाउ व्हाट वुड बी द रेफरेंस ऑफ द फ्रेज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यूज इन कॉन्वर्सेशन अबाउट यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिक्स इन 2007? ऑफ कोर्स दैट वुड बी जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिक्स इन 1996 क्या आएगा, यहां पर हमारे पास आएगा बिल क्लिंटन। सो यहां पर देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिक्स इन 2007 ये एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है। यहां पर हमने यूज किया जॉर्ज डब्ल्यू बुश को,
और फॉर द सेम लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन यहां पर हमने यूज किया बिल कैलेंटन को. सो द सेम लिंग्विस्टिक atom and we have different reference. In 4, in the light of the preceding questions, okay, does the reference of an expression vary according to A, the circumstances, time, place, etc., in which the expression is used, of course, or B, the topic of the conversation in which the expression is used, or C, or both A and B, circle your choice. So आपके ख्याल में हमने जो ऊपर ये दो एक्सप्रेशन यूज किए हैं, right? Does the reference of the expression vary according to A, the circumstances, time, and place? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम डिफरेंट है, यहाँ पर एक टाइम है और यहाँ पर दूसरा टाइम है, लेकिन ये देखिए एक्सप्रेशन तो सेम है, यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिक्स, सिर्फ यहाँ पर ईयर चेंज हुआ है. सो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ टाइम एंड प्लेस इन विच द एक्सप्रेशन इज यूज, और बी द टॉपिक ऑफ द कॉन्वर्सेशन इन विच द एक्सप्रेशन इज यूज, और सी बोथ या दोनों, A and B, circle your answer. So इसमें हमारे पास दोनों आ सकते हैं क्योंकि it depends on the conversation and also depends on the time and place you are using the expression. Fine. एक एक्सप्रेशन किसने यूज किया है 2007 में और एक वही एक्सप्रेशन किसने यूज किया है 1996 में. It depends on the time and the place and also depend on the conversation. अभी यहां पर हम कन्वर्सेशन यूज कर रहे हैं इस टाइम मौके पर. एक हमने 2007 वाला रेफरेंस दिया और एक हमने 1996 वाला. सो ये दोनों है कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और दूसरा कि आप टाइम और प्लेस जो है ना वो कौन सा है. कमेंट. देयर आर cases of expressions which in normal everyday conversation never refer to different things. फिर हमारे पास ऐसी भी expressions है जब हम उसको नॉर्मल और एवरीडे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, सो उसका सिर्फ एक रेफरेंट आएगा. ठीक है, एक एक्सप्रेशन का सिर्फ एक रेफरेंट आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे. इन मोस्ट एवरीडे सिचुएशन दैट वन कैन envisage have constant reference. उसके जो रेफरेंस होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो वेरिएबल नहीं होंगे, वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस और अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्सेशन चेंज नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान, आई एम इन केपी, राइट? इस वक्त मैं कह रहा हूं कि द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. इसी वक्त आप इंडिया में बैठे होते हैं और आप कहते हैं द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. कोई और बंदा जो है ना वो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. सो अगर मैं कहता हूं या आप कहते हैं या जो बंदा यूएस में बैठा है वो कहता है, सो ये तीनों जो हमारे पास लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है, द सेम लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, इसका रेफरेंस भी सेम आएगा. वी आर रेफरिंग टू द सेम कंट्री, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. और अगर मैं कह दूं कि पाकिस्तान, राइट, आप कहते कि पाकिस्तान, कोई और कहते कि पाकिस्तान, कोई और कहते कि पाकिस्तान, सो द सेम लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन will have the same reference. It will refer to the same country in the world, and that is Pakistan. So this is called a constant referent of the reference or the linguistic atom that we are using. I'll give you some more example now. Practice. Imagine two different everyday situation. दो मुख्तलिफ हमारे पास everyday situation है in which separate couples are having separate conversation about what they refer to with the phrase the moon. एक कपल है, फॉर एग्जाम्पल वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, एक लड़की है और एक लड़का है. एक कपल वो इंडिया में बैठा हुआ है, एक लड़का है और एक
लड़की है. And they are using the phrase the moon, right? So अगर एक कपल जो इंडिया में बैठा हुआ होता है और वो कहते हैं कि द मून, और एक कपल जो पाकिस्तान में बैठा हुआ होता है और वो भी कहते हैं कि द मून, सो दोनों का जो रेफरेंस होगा वो एक होगा, मून. वो जिस मून को रेफर करते हैं सो वो भी द सेम मून होगा, और जिस मून को यहाँ पाकिस्तान में एक कपल बैठा हुआ होता है वो रेफर करते हैं वो भी सेम होगा. So it means that this linguistic expression or this linguistic item used by Indian couple will refer to the same, like the same referent. There will be the moon. Or the couple sitting in Pakistan, if they utter the word the moon, look at the moon. So वो भी उसी मून को रेफर करे. So it means मतलब ये कि मून का जो रेफरेंस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता. कहीं पर भी कोई बंदा बात करते हैं कि द मून, सो वो उसी मून को रेफर करेगा जो एक है, जो एग्जिस्ट करता है. सो वुड दे बी टॉकिंग अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट अगर एक कपल वो पाकिस्तान में है और एक कपल हिंदुस्तान में है, और दोनों जो है ना वो रेफर करते हैं लिंग्विस्टिक आइटम यूज करते हैं द मून. सो क्वेश्चन ये कि वुड दे बी टॉकिंग अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट, आई डज द मून नॉर्मली हैव कांस्टेंट रेफरेंस? ऑफ कोर्स मून हैज कांस्टेंट रेफरेंस. जब भी हम मून को रेफर करते हैं और ये रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन द मून एंड द लिंग्विस्टिक आइटम द मून, राइट, सो उसका जो रेफरेंस होगा मून होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि दुनिया में कोई और नहीं है, एक ही मून है. कंट्री एक है पाकिस्तान, कंट्री एक है इंडिया. सो हमारे पास एवरीडे सिचुएशन में जब हम बात करते हैं सो वही लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन उसका रेफरेंस जो है ना वो एक होगा. इससे पहले हमने पढ़ा कि एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के कई वेरिएबल रेफरेंस हो सकते हैं, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि एक लिंग्विस्टिक आइटम के कांस्टेंट रेफरेंस होगा, एक रेफरेंस होगा, 2 या 3 नहीं होंगे. ठीक है, आपको याद है ना पहले हमने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि माई चेयर इज वेरी कंफर्टेबल, सो जिस चेयर को मैं रेफर कर रहा हूं यहां पर वो है. अगर आप कहते हैं कि माई चेयर इज वेरी कंफर्टेबल, आप किसी और चेयर को रेफर कर रहे हैं. अगर कोई और कहता है कि माई चेयर इज वेरी कंफर्टेबल, सो कोई और किसी और चेयर को. सो एक चेयर के हमारे पास सो मेनी वेरिएबल रेफरेंस हो सकते हैं, रेफरेंसेस हो सकते हैं कई. अगर मैं कहता हूं कि आई हैव अ फ्रेंड, सो मेरा जो दोस्त है मैं उसको रेफर कर रहा हूं. अगर आप कहते हैं कि आई हैव अ फ्रेंड, सो आपका जो दोस्त है आप उसको रेफर करें. कोई और कहते हैं कि आई हैव अ फ्रेंड, सो वो उसको रेफर करता है. सो एक लिंग्विस्टिक आइटम या टर्म के सो मेनी वेरिएबल रेफरेंस हो सकते हैं, और एक लिंग्विस्टिक आइटम, राइट, उसका सिर्फ एक रेफरेंस भी हो सकता है, कांस्ट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ डज द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नॉर्मली हैव कांस्टेंट रेफरेंस? Of course, it has a constant reference because we will have only one referent, and that is the People Republic of China. Does Anglo normally have constant reference? Of course, whenever we say Anglo, so we refer to that one. And does Halley's comet normally have constant reference? Of course, because this only in the world only one Halley's comet, so that will be also like a constant referent. Comment. In fact, there's very little consistency of reference in language. In everyday discourse, almost all of the fixing of references come from the context in which expressions are used. Two different expressions can have the same referent also. अब इसमें और मसला भी है, कभी कभी हम दो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन यूज करते हैं और उसका रेफरेंस जो है ना वो एक होता है. इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन होता है, उसके कई रेफरेंस हो सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल रेफरेंसेस हो सकते हैं. फिर हमने पढ़ा कि एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का एक रेफरेंस होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा. अब हम पढ़ रहे हैं कि टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम रेफरेंस. हमारे पास दो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस होंगे और इसका रेफरेंस जो है वो एक होगा. सो द क्लासिकल एग्जांपल इज द मॉर्निंग स्टार
and the evening star. Morning star और evening star ये दो मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है और दोनों का जो रेफरेंस है वो सेम है, एक है, सिर्फ उसकी पोजीशन वो चेंज होती रहती है. सो बोथ ऑफ विच नॉर्मली रेफर टू द प्लैनेट वीनस. वीनस है और इसके लिए दो मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन वो यूज हुए हैं. So this is okay that sometimes we can have two different linguistic expressions, but we will have one referent for that. Some practice. In a conversation about the United States of America in 2007, can the president and the leader of the Republic Party have the same referent? Of course, same. So it means वो कौन है 2007 में? वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है. तो हमने दो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन यूज किए हैं. मुख्तलिफ कौन से हैं? एक हमारे पास है कि प्रेसिडेंट, सेकंड द लीडर ऑफ द रिपब्लिकन. सो लीडर ऑफ द रिपब्लिकन एंड द प्रेसिडेंट दो मुख्तलिफ हमारे पास लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है जिसका रेफरेंस जो है ना वो एक होगा. Like for example, if I say that currently that the chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf वो कौन है? इमरान खान है. और अगर मैं कहता हूं कि इमरान खान तो वो भी इमरान खान है. ठीक है. अगर मैं इस तरह कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं. अगर मैं कहता हूं कि द अपोजिशन लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, दैट इज उमर अयूब, वो है ना, उमर अयूब है. और अगर मैं फिर इस तरह कहता हूं कि द पर्सन हु वन देयर इलेक्शन इन 2024 इन फरवरी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम मैं लेता हूं तो वो भी उमर अयूब होगा. सो मतलब ये है कि हमारे पास कभी कभी हम दो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं और उसका जो रेफरेंस होता है वो सेम होता है. ठीक है. नाउ आंसर वुड बी यस. If we are talking about a situation in which John is standing alone in the corner, can John have the same reference as the person in the corner? Of course, yes. अगर हम कहते हैं कि the person in the corner और फिर हम कहते कि जॉन इन द कॉर्नर, सो जॉन इन द कॉर्नर एंड द पर्सन इन द कॉर्नर दो मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है और इसका जो रेफरेंस होगा वो सेम होगा, एक ही बंदा होगा. ठीक है. फाइन. Okay, so this was, I guess, all about the reference. We can have so many examples that, okay, there's sometimes we are using two different linguistic expression for the same referent. Fine. And sometimes we are using the same linguistic expression for different referents. And sometimes we are using that one linguistic item for one referent. So this was all about that how we gain the meaning of words through reference. Thank you so much. Keep watching and please provide your valuable comment. In the next lecture, we will discuss how do we know meaning of words through sense relation.